Hello everyone, good afternoon. My name is SR Pusti. You are watching my beautiful channel Love You Science. So in this lecture what I am going to do, I will explain the basic concept of Laplace transformation, and there are some formula we need to remember, basic 7 formula at least. So I have mentioned here. So first thing we need to understand what is Laplace transformation, how the formula came. And first we derive this formula, then it will easy for you to remember and to implement in numerical. Okay? So we'll derive one by one. सो फर्स्ट तो देखते हैं लैप्लेस क्या है. लैप्लेस मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. ओके, सो वी कैन डिवाइड लैप्लेस इनटू 3 पार्ट्स. फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग वी कैन से लैप्लेस का सिंबल एल होता है. ठीक है, क्या है? एल. सो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रल. फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन पार्ट और इंटीग्रल पार्ट. Second part is exponential part or exponential function, and third part is factor or function. Okay, so integral part मतलब integration from 0 to infinity. Clear? Exponential part मतलब e to the power minus 80. factor मतलब जो function होता है f of t. मतलब ये जो part है, first part integration part is fixed and exponential part is also fixed, and the function part is variable. So overall what we conclude, what I mean to say, Laplace of, let you have a function f of t. F of t is the function. So if I take Laplace of f of t, so I can write in this format, मतलब the standard format to write Laplace transform of a function which is integration. फर्स्ट टर्म क्या है? इंटीग्रेशन 0 to infinity which is fixed, ये तो चेंज नहीं होगा. सेकंड क्या है? ये लिखना पड़ेगा, क्या है? एक्सपोनेंशियल पार्ट which is e to the power minus of st, that is also fixed. मतलब दो टर्म तो हो गया. फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म. थर्ड टर्म क्या है? f of t, and since integration is there you have to multiply dt. ये हो गया आपका बेसिक, or you can say the standard representation of a function of Laplace transformation of a function. ठीक है, clear? So by using this concept, by using that standard format, we can derive this formula. So coming to the first formula, formula number 1, Laplace of constant. Laplace of constant is constant by s. So we'll derive this one. So here function, what is the function? Here let function is your constant c. ठीक है. So मैंने क्या बोला था? First point is you need to represent in this form. So first is integration from 0 to क्या है? Infinity. Second क्या है? e to the power minus 80 which is fixed. Third क्या है? f of t और factor, then dt. ठीक है. So now integration of minus st, f of t क्या है? f of t, what is f of t here? f of t is c into dt. c तो constant बाहर आ जाएगा. Then integration of e to the power minus 80 and limit is from 0 to infinity. 0 to infinity. ठीक है. So now tell me what is the integration of e to the power minus st. So it is e to the power minus st by minus s, that you know integration of, like integration of e to the power 80 is equal to e to the power 80 by a, और कोई भी कांस्टेंट होगा नीचे डिवाइड होगा. अगर इन डिफरेंशिएशन होता है then you would have multiply minus s. So these are the basic thing that you know from class 12th. okay, so now ये तो s कांस्टेंट है, तो c by minus s, then e to the power minus st, limit क्या है? 0 to infinity. Now c by minus s. So here you know how to put limit. You put infinity in place of t, minus of 0 in place of t. So your answer will be e to the power minus 80 minus e to the power 0. यहाँ तक clear? So one more thing you remember, e to the power infinity is infinity, e to the power minus infinity is 0, and e to the power 0 is 1.
मतलब just a minute, e to the power 0 is 1. You need to remember this thing. So now tell me here, c by minus s, e to the power minus infinity क्या है 0. So 0 minus e to the power 0 क्या है 1. So 0 minus 1 is minus, minus minus will be cancelled. So answer is c by s. मतलब फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, क्या मिल गया, लेप्लेस ऑफ कांस्टेंट इज c by s. सो एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल है लेप्लेस ऑफ, कोई बोलेगा लेप्लेस ऑफ 1 कितना होगा 1 by s. लेप्लेस ऑफ 5 कितना होगा 5 by s. लेप्लेस ऑफ लाइक 8 कितना होगा 8 by s. डन, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. कमिंग टू द सेकेंड फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला क्या है, लेप्लेस ऑफ e to the power 80. ठीक है, सो मतलब हियर फंक्शन इज और फैक्टर इज e to the power 80. सो जैसे मैंने बोला था, हाउ डू रिप्रेजेंट दिस वन. फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन पार्ट विच इज फिक्स्ड. सेकेंड पार्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल पार्ट विच इज e to the power minus st. देखो इधर मैंने बोला था, कहाँ है वो, यहाँ पे. this is constant, this is constant, and finally you have to take ft. ठीक है, सो हियर e to the power फैक्टर क्या है, ओके लेट मी राइट. ओके, सो हियर 0 to infinity e to the power minus 80, फैक्टर क्या है e to the power 80 into dt. Done. So now we can do one thing, 0 to infinity. So here we can take minus t as common, so it is s minus a. मतलब I can write down here minus of s minus a into t. Yes or no? I have taken t as common, so it will be s minus a. I have taken minus t as common. Remember, minus t as common, so it is s minus a into what, dt. So now integration of this function, exponential function का integration क्या है, e to the power minus s minus a into t by this part is constant, so divide हो जाएगा minus a. That you know, integration that you know from class 12th. इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज e to the power this by this constant factor. constant factor क्या है, माइनस ऑफ s माइनस a डिवाइड हो जाएगा. देन लिमिट पुट करो, लिमिट क्या है 0 to infinity. देन ये टर्म को बाहर ले आओ, मतलब माइनस s by a, ये जो टर्म को बाहर ले आओ. ठीक है, अंडरस्टूड. देन ये क्या है माइनस a into t. लिमिट क्या है 0 to infinity. Now you know how to put limit here. Put infinity in place of t, then minus of 0 in place of t. So final answer क्या हो जाएगा, 1 by minus s minus a bracket, then e to the power कितना हो जाएगा minus infinity minus e to the power 0. So e to the power minus infinity क्या है, मैंने क्या बोला था आप लोग को, अभी भी जस्ट बोला था e to the power minus infinity क्या है 0, and e to the power 0 क्या है 1. So 0 minus of 1. So minus 1 minus minus cancel. So answer is 1 by s minus a. ठीक है, so मतलब सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला क्या मिला आंसर, लेप्लेस ऑफ e to the power 80 is equal to 1 by s minus a. क्लियर. देखो 1 by s minus a. So एग्जाम्पल ले लेते. देखो एग्जाम्पल क्या है, लेप्लेस ऑफ, अगर कोई बोलेगा लेप्लेस ऑफ e to the power 2t, आंसर क्या होगा जल्दी बोलो. 1 by s, ये तो कांस्टेंट, ये तो फिक्स है, माइनस ऑफ a कितना इधर है 2, सो 1 by s minus 2. अगर लेप्लेस ऑफ e to the power लेट 60 क्या होगा, सेम आंसर 1 by s minus 6. अगर ये माइनस 6 होगा माइनस 2 होगा, e to the power minus 2. टेल मी क्या हो जाएगा, ये 1 by s minus of minus 2, मतलब 1 by s plus 2. सिमिलर लेप्लेस ऑफ e to the power minus 60 क्या हो जाएगा, 1 by s minus of minus 6, मतलब 1 by s plus 6. क्लियर. ओके, सो कमिंग टू थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला which is again important. Laplace of cos 80 and Laplace of sin 80, a fourth one. Actually how to remember,
see, I'll let you know how to remember. Cos 80 का क्या होगा, s by a square plus a square. इसमें क्या होगा, a by a square plus a square. मतलब डिनोमिनेटर पार्ट इज फिक्स्ड व्हिच इज a square plus a square. न्यूमरेटर पार्ट में इसमें s है, cos मतलब s, cos मतलब s, इसमें क्या है a, by default a. So so leave it. So better you derive it. मे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. So we'll derive this formula. So as you know, as per the Euler's theorem that you know, मतलब from that theorem we can get a relation between exponential function and trigonometric function. मतलब you can write e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta. I क्या है, it's a complex parameter, or you can say j is a complex parameter, complex conjugate that you know, e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta as far as Euler's formula is concerned. So from that expression we can get the Laplace of sin 80 and cos 80. How? See, you do one thing, you replace theta is equal to 80, replace करो theta is equal to 80. So ये क्या हो जाएगा, e to the power I theta is equal to cos of, sorry इसमें just a minute, मतलब e to the power I 80 will be equal to cos of 80 plus I sin of 80. Clear? Yes or no? So now we can get this formula of Laplace of cos 80 and sin 80 by using this expression. कैसे देखो, you do one thing, you take Laplace of LHS and Laplace of RHS. RHS में तो वो डिवाइड हो गया, डिवाइड कर दो, प्लस ये पार्ट को अलग कर दो, ये पार्ट को अलग कर दो. So step wise you have to mention, but I am writing here directly. So what I am doing now, I am taking Laplace of LHS and Laplace of RHS. ठीक है. So Laplace of LHS क्या होगा, Laplace of LHS क्या होगा, e to the power 80. मैंने अभी अभी जस्ट बोला था Laplace of e to the power 80 क्या फॉर्मूला, 1 by s minus a, बोला था कि नहीं. तो सिमिलरली Laplace of e to the power क्या है, IAT, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा 1 by s minus, टेल मी, हियर इट इज a, सो हियर इट इज IA, मतलब a को रिप्लेस करो IA में, सो क्या होगा IA. क्लियर? So you mention here 1 by s minus IA is equal to, do not touch the RHS part, because finally if we compare LHS to RHS we can get this result, right? So Laplace of रखो आज it is Laplace of cos 80 plus I को बाहर ले आओ, I Laplace of sin 80. क्लियर? यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर. Okay, so let me erase. So now what we can do, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो. कैसे सिंप्लीफाई करोगे, s प्लस आई ए ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है. सो आर एच, डू नॉट टच आर एच, यू कीप इट एज इट इज, cos 80 प्लस आई ऑफ Laplace sin 80. यहाँ तक क्लियर? ओके. इसमें क्या, ये क्या हो जाएगा, s प्लस आई ए बाय, इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर, आई इंटू आई क्या है, आई इंटू आई इज आई स्क्वायर इज माइनस वन, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज ये आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज माइनस वन. So Laplace of cos 80 plus I Laplace of sin 80. Okay, so now I can write s by a square plus I into a by a square plus a square, which is equal to Laplace of cos 80
प्लस आई लेप्लेस ऑफ साइन 80, ठीक है। ओके, सो नाउ कंपेयर करो LHS टू RHS, कंपेयर करो। इफ आई कंपेयर इट, देन ये टर्म क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, एंड ये टर्म क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म। मतलब लैप्लेस ऑफ क्या है, cos ऑफ 80 इज इक्वल टू s बाय s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, एंड लैप्लेस ऑफ sin 80 is equal to what, a by a square plus a square, clear। so ये formula number 3 and formula number 4, ओके। सो इसमें एक देखते हैं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने क्या बोला अभी, लेप्लेस, लेट लेप्लेस ऑफ साइन 3t, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। लेप्लेस ऑफ cos 5t, लेप्लेस ऑफ ठीक है, दो क्वेश्चन करो। देखो लेप्लेस ऑफ साइन 80 क्या फॉर्मूला था, व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी। a बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेप्लेस ऑफ cos 80 का फॉर्मूला क्या था, s बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाउ टू रिमेम्बर, सी इसमें cos मतलब s, डिनोमिनेटर पार्ट इज फिक्स व्हिच इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos मतलब s, बाय डिफॉल्ट साइन में क्या हो जाएगा a। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बोलो साइन 3t मतलब क्या है, साइन 80, 3 बाय, टेल मी, 3 बाय a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, सो 3 बाय a स्क्वायर प्लस 9, सो cos 5t क्या होगा, s, s बाय, देखो ये तो फिक्स्ड है, s बाय a स्क्वायर प्लस a कितना है 5, 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। आज तो टाइम हो गया, सो आई हैव जस्ट डिराइव 4 फॉर्मूला, होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। इन कमिंग क्लास I will derive rest 3 formula and we'll solve many numericals. So आज तो टाइम हो गया, मेरा थोड़ा काम है। So thank you so much for watching my video. Thank you.